स्वबिम्बायै श्रीचक्रबिलान्तस्तेजसे ललितायै द्विभुजायै सिद्धश्रीकामाक्ष्यै देवतायै नमः हृदये लम्बमानेतरकरललिता स्वर्णविग्रह अम्बुजाब्जं प्रति दक्षहस्तेनास्ते बिलाद्बहिः कामाक्षीति द्विरुक्तैः शब्दैः ध्यात्वा ऐक्यतः कामाक्षी कामाक्षी जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर పూజలో ఉపయోగ చేసే స్వర్ణ పాత్రములో వాళ్ళు స్వామివారి వస్త్రాలను పెట్టి ఇచ్చేస్తున్నారు. ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూః సన్యస్తం మయా ఓం భువః సన్యస్తం మయా ఓం స్వః సన్యస్తం మయా ఓం భూర్భువస్వః సన్యస్తం మయా. The way we take oath, he has taken his oath for sannyasa. The way we put our hands up when we take the oath, he's put his hands up too, except that both hands are open and facing the sky, because that is the direction in which he is going to move on from today. So he has said, I want to take sannyasa, and he has pronounced it that way openly in front of the Panchabhutas, in front of Kamakshi, in front of his own guru, in front of the rest of the society. ரெண்டு கையும் தூக்கி அவ வந்து பிரமாணம் சொல்ற மாதிரி சந்நியஸ்தம்மையா அப்படின்னு சொல்லி சந்நியாசாசிரமத்துக்கு நான் போக போறேன், எடுத்துக்க போறேன், இனிமே நான் சன்னியாசி, இனிமே நான் சன்னியாசி அப்படின்னு இறஞ்சி சொல்லியிருக்கார் స్వామివారు. రెండు చెయ్యి మీద తల మీద లేపి సన్యాసం అయిపోయింది నాది, నేను సన్యాసానికి వెళుతున్నాను అని చెప్పి ఆయన ప్రమాణం చెప్పినట్టు చెయ్యెత్తి చెప్పేసుకున్నారు. महाराज ने दोनों हाथों को प्रमाण जो करते हैं जब हाथ ऊपर रहता है, उसी नाते उन्होंने दोनों अपने हाथ ऊपर करके आकाश की ओर दिखा के जो स्वर्ग का मार्ग है उसकी ओर दिखा के सन्यासी का प्रवेशन ऐसा उन्होंने उद्घोषित किया है. அவ ஆபரணங்கள்லாம் கட்டி எல்லாத்தையும் அவள் குடும்பத்தை ஒப்படைச்சிடுறார். இப்போ தான் புத்திரேஷனா வித்தேஷனான்னு சொன்னமே அந்த
நம்ம சொன்ன மாதிரி அவர் சரீரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்வர்ணத்தையும் அவர் தியாகம் பண்ணுறார். அதுக்கப்புறம் தலையில் சகலவாத்தியம் வாசிச்சுட்டே பண்ணுவார். அதுக்கப்புறம் அவர் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பூணலை தியாகம் பண்ணுவார். அப்புறம் பூர்ண சந்நியாசத்துவம் அடைஞ்சு அவர் உத்தராபிமுகம் ஃபேஸிங் நார்த் அவர் நடப்பார். அந்த சிகோத்பாட்டனம் அப்படின்னு அவர் பண்ணுறார். இப்போது தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி சிகை அதை கையாலேயே விசர்ஜனம் இழுத்து விசர்ஜனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு அவகாசம் அதை அவர் பண்ணிட்டு இருக்கார். எல்லாரும் தரிசனம் பண்ணுறார். சந்நியாச ஸ்வீகரணத்துக்கு எவ்வளவோ அங்கங்கள், இது ஒரு முக்கியமான அங்கம், சிகையை விசர்ஜனம் பண்ணுறது. விசர்ஜனம் பகிர்வசேர்ணத்வம் அந்தః பிரவிஷ்ய மத்யே त्वमन्तः प्रविश्य त्वमन्तः प्रविश्य मध्ये ह्यजस्रं परमं पवित्रं यशोबलं ज्ञानवैराग्यमेधा सत्त्वस्य शुद्धिं सन्ततं मे प्रयच्छ. ஓம் இது ஓம் இது. அடுத்தது அவளுடைய உபநயனத்தை விசர்ஜனம் பண்ண போறா. சகலவாத்தியம் கெட்டி மேளம், சகலவாத்தியம் கெட்டி மேளம். சர்வா जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर सर्वा என்ன கொஞ்சம் இறங்கலாம். He will relinquish everything on himself. There will be nothing on him as he takes his 5 steps towards north. Panchapadangatva is what it says. Saptapadamva is an alternative, 5 to 7 steps. He walks towards north, because for all of us, north, Uttaram, is the direction in which the holiness, the spirituality, the Himalayas, the Gangas, they all west. So he walks in search of that. राहिमां सर्वलोकेशा वासुदेव सनातना सन्न्यस्तं मे जगद्योने पुण्डरीकाक्षमोक्षदा युष्मच्चरणमापन्नं त्राहि मां पुरुषोत्तमा. He is pronounced himself a sannyasi, and he prays to the Almighty Bhagavan to say that I have taken refuge in you and may you protect me from here on. அவ சன்னியாசி, நான் சன்னியாசி ஆயிட்டேன், பரம் பகவானே உங்களுடைய சரணத்தில் வந்துட்டேன், இதுக்கு மேலே நீங்க தான் எங்களை ரட்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். वासुदेव सनातना सन्न्यस्तं मे जगद्योने पुण्डरीकाक्षमोक्षदा युष्मच्चरणमापन्नं त्राहि मां पुरुषोत्तमा. இதே ஸ்லோகத்தை அவ பெரியவாளை பார்த்து அபிமந்திரமா சொல்லியிருக்கா. ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் பகவானும் பெரியவாளும் வித்தியாசம் கிடையாது. அதனால அவர் தான் நமக்கு மகாவிஷ்ணு, அவர் தான் சிவன், அவர் தான் பிரம்மா, அவர் தான் நமக்கு 303 தேவதைகள், அவர் தான் பஞ்சபூதம். அதனால இந்த ஸ்லோகத்தை பெரியவாளை பார்த்து அவர் சொல்லியிருக்கார்.
भो भो तिष्ठ तिष्ठ लोकानुग्रहार्थं दण्डादिगृहाण పాత్రంలో సకల వాద్యం వస్త్రాలు ఇచ్చేస్తున్నారు. సకల వాద్యం ఆ వస్త్రాల్ని ధరించుకొని ఆయన వేడకు వస్తారు. ఈ వస్త్రాలు ఇచ్చే ముందు ఆయన చెప్పిన శ్లోకము స్వామివారిని చూసి ఇదే శ్లోకం చెప్పారు. త్రాహిమాం సర్వలోకేశ ద్రోణసుదేవ సనాథన సన్యస్తం మే జగద్యోనే పుండరీకాక్ష మోక్షద యుష్మత్ శరణమాపన్నం త్రాహిమాం పురుషోత్తమ. ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని చెప్పి మీ శరణానికి నేను వస్తున్నాను, నేను సన్యాసం తీసుకున్నాను అని చెప్పి మన స్వామివారి భగవత్ శరణానికి స్వామివారు आश्रम स्वीकार किए हैं. अभी कुछ ही समय में दोनों आचार्य इस आवरण से बाहर सूर्य के नाती जैसे सूर्य समुद्र से बाहर आता हुआ हमको नजर आता है, आकाश में संचार करता हुआ नजर आता है, उसी प्रकार भगवान इस आवरण से अभी बाहर आके संचार करते हुए इस वेदिका में जहाँ पे उनका आसन रखा है वहाँ पे आकर के आसन ग्रहण करेंगे और उसके ऊपरी जो कार्यक्रम है हम बताते जाएंगे. जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर சத்திபதிகள் பிரியறதுங்கிறதே கிடையாது. அதே மாதிரி சந்நியாசாசிரமத்தை தண்டமும் ஆச்சாரியாலும் பிரியவே கிடையாது. அதுக்கான பிரமாணமும் எங்கேயும் கிடையாது, அதுக்கான சுவாதீனமும் அவளுக்கு கிடையாது. அந்த தண்டத்தை அவ தரிச்சுண்டு அந்த தண்டமானது அவளுக்கு சகா மாதிரி ஃப்ரெண்டு மாதிரிங்கிறார். ஏன் சஸ்திரம் ஃப்ரெண்டா இருக்கணும்னு கேட்கலாம். சஸ்திரமானது ஃப்ரெண்டு ஒத்தர் தான். ஆபத் காலத்திலையும் சம்பத் காலத்திலையும் விபத் காலத்திலையும் கூடவே இருந்து நல்லது பண்ணுவார். அந்த மாதிரி இந்த தண்டமானது அவ கூடவே எல்லா காலத்திலையும் இருந்து நமத்தன பேருக்கும் அது ஒரு पुण्य का कार्यक्रम उसमें चलेगा. मेरे हाथ में कीजिए वो जो दंड है. सूर्य प्रकाशम सूर्योदयम अयिंदी. రెండు ఆచార్య స్వామి వారిని ఈ ప్రపంచం మొత్తం దర్శనం చేసుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఎలా సూర్యుడు ఆకాశంలో సంచరిస్తారో అదే ప్రకారంగా జలం నుంచి సూర్యుడు వచ్చేటట్టు ఈ జలం నుంచి ఈ స్వామివారు ఈ ఒక విషయంలో వస్తున్నారు. అందరూ దాన్ని దర్శనం చేసుకోండి. ఈ మహానవసరం మహత్ముహూర్తం. ఈ ముహూర్తాన్ని మళ్ళా ఎవరు పొందలేరు. దీన్ని దర్శనం చేసి అనుగ్రహానికి పాత్రమాగవలను అని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. హర నమః పార్వతీపతయే. జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర జయ జయ శంకర. ఇప్పుడు స్వామివారు అనుష్ఠానం చేసిన ఈ ఒక దండాన్ని ఆయన శిష్య స్వీకారం చేసిన శిష్యులకి ఆయన ప్రదానం చేస్తారు.
நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்திரஸ்ர வஜ்ரோசி அப் इन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रघ्नः शर्म मे यच्छा यत्पापं तन्निवारय सखा मा गोपाय इन्द्रहस्ते यथा वज्रम् शूलं हस्ते हरस्य च विष्णुहस्ते यथा चक्रं तथा दण्डो भवाद्य मे हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर பெரிவானுக்கிரம் பண்ணி தண்டத்தை அவருக்கு வாத்தியகோஷம் சகல வாத்தியம் கொடுத்துருக்கா. ஹர ஹர சங்கர जय जय शंकर हंसी शंकर காமகோடி சங்கர हंसी शंकर காமகோடி சங்கர जय जय शंकर ஹர ஹர சங்கர जय जय शंकर ஹர ஹர சங்கர जय ஹர ஹர சங்கர हंसी शंकर காமகோடி சங்கர हंसी शंकर காமகோடி சங்கர जय जय शंकर ஹர ஹர சங்கர जय जय शंकर ஹர ஹர சங்கர அனுஷ்டான பலக దండத்தை கொடுத்துட்டார், கமண்டலு கொடுத்துட்டார். அனுஷ்டான பலக இல்ல அதுதான் நான் கொடுக்கணும். ஜபம் நித்தியம் பண்ண போறாவா, அதுதான் மந்திரவத்தா இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்கேன். பாஸ்கட் சொல்லியிருக்கேன், பாஸ்கட் சொல்லியிருக்கேன். అవరికి స్వామివారు ఆసన స్థానంలో పీఠమే ఇచ్చేస్తున్నారు. ఆ పీఠాన్ని ఈ కొత్త స్వామివారు, బాలస్వామివారు, నూతన స్వామివారు, శంకరాచార్య స్వామి వారు ఆ పీఠాన్ని స్వీకరిస్తున్నారు. అందరూ దర్శనం చెయ్యండి. शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर கருடா जय जय शंकर ఆచార్యాల அவர் ప్రార్థన பண்ண పోறார். గరుడాసనంలో కూర్చొని ఆయన ఆచార్య స్వామి వారిని ప్రార్థన చేస్తారు.
गरुड़ासन में उपस्थित अपने आचार्य को संबोधित करते प्रार्थना करेंगे. His Holiness will take the Garudasana and address his Guru now. भो जगन्नाथ गुरो संसारवह्निना दग्धं मां कालदष्टं च त्वामहं शरणागतः. यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह वेदात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये. அவருக்கு இப்போ அபிஷேகம் பண்ணி வைக்க போறார். जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर. சாலக்கிராம அவ சிரஸ்ல வைக்கிற సాలగ్రామ హిస్ హోలీనెస్ సాలగ్రామ స్వామివారి శిరస్సులో పెడుతున్నారు. సాలగ్రామ महाराज के शिरस में प्रतिष्ठा करके शंखाभिषेक कर रहे हैं. శంఖంతో అభిషేకం సాలగ్రామానికి చేస్తున్నారు. హిస్ హోలీనెస్ ఈస్ డూయింగ్ అభిషేక విత్ శంఖ టు సాలగ్రామ. சங்கால சாலக்கிராமத்துக்கு பெரிவா அபிஷேகம் பண்ணிட்டுருக்கா. இளைய சுவாமிகள் வாளுடைய தலையில் அந்த சங்கத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த சாலக்கிராமத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி சாந்தி பாட் ஹரியமா எல்லா வைதிகாலும் சேர்ந்து சொல்லுங்க. बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. புருஷ சுக்த சொல்லி சாலிக்கிராமத்துக்கு அபிஷேகம் பண்ண போறா. சபோமிம் விஸ்வதோ புருஷயே வேதம் சர்வம் யத்பூதம் யச்ச பவ்யம் உதாமிருதத்வஸ்யேஷானோ யதன்னேனாதிரோஹதி ஏதாவாணஸ்ய மகிமாதோத்யாயாஸ்ச புருஷः பாதோஸ்ய விஸ்வாபூதானி த்ரிபாதஸ்யாமிருதம் திவி त्रिपादोर्ध्वमुदयेत्पुरोढः पादोऽस्येकाभवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामस्तादनानसने अभि तस्माद्विरालजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अद्य ऋच्यतपश्चाद्धो विमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीताज्यं ग्रेत्मश्चरद्धभिः तस्मात् पशुवायव्यानारण्याग्राम्याश्च
तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरुधः सामानि जज्ञरे छन्दांसि जज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मात् जायत तस्मात् शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर राज्यो वासो मे नयजते देवसुवामेदागुंसि एतावन्तो वै देवानागुंसवा एवास्मै सवान् प्रयच्छन्ति त एनं पुनस्तुवन्ते राज्याय देवसूराजा भवति सदाशिवसमारम्भा शङ्कराशिवसमारम्भाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा எல்லாரும் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க सदाशिवसमारम्भा सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता अस्मदाचार्यपर्यन्तम् वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की जय शंकराचार्य परंपरागत मूलाम्नाय सर्वज्ञ श्री कांची कामकोटि पीठाधिपति जगद्गुरु शंकराचार्य महाराज की డేట్స్ అక్షతలు మళ్ళా ఖర్జూర ఉన్నారు అది అందరూ సవినయంగా తీసుకోవాలి అని ప్రార్థిస్తున్నాము जगत कल्याण के लिए दोनों महाराज ने अक्षत और खरजूर इसको अनुग्रह करके सभी को दे रहे हैं सभी को ये प्रसाद आएगा श्रद्धा भक्ति से इसका स्वीकार करना इस हमारा प्रार्थना है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। देवे देहे च देशे च भक्त्यारोग्य सुखप्रदं बुध पामर सेव्यन्तं श्री जयेन्द्रं नमाम्यहम्। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्रीचरणानाम् अनुग्रहेण गुरुपरंपरा अनुग्रहेण च एतद् तुरीयाश्रम स्वीकरण कार्यक्रमः सम्यक् सम्पन्नः। सनातन धर्म संरक्षणार्थम् अद्वैत तत्व सिद्धान्तस्य प्रचारार्थं ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः इति
औपनिषद तत्वस्य मतस्य प्रचारार्थं काञ्च्यां प्रतिष्ठापितस्य काञ्ची कामकोटिपीठस्य या गुरुपरम्परा अनुवर्तते तस्यां गुरुपरम्परायाम् अस्मत् परमगुरवः तथा गुरवश्च ये श्री श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः तथा अस्माकं गुरवः ये श्री 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 जयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्याः एते सर्वेपि लोकोद्धारणार्थं लोकस्य उपकारार्थं धर्मस्य संरक्षणार्थं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करमिति अभिप्रायस्य कार्यरूपेण निर्वहणार्थम् अनेक शुकस्य गीतं श्रूयते अनेक धार्मिक सामाजिक कार्याणि कृत्वा अस्माकम् इदानीमपि अन्य रूपेण अनुग्रहं वितरन्तो वर्तन्ते। तेषाम् अनुग्रहबलेन यः अद्य कार्यक्रमः सम्पन्नः तस्य वैदिकाङ्गत्वेन योगपट्टसहित नामस्य उद्घोषणमपि अङ्गभूतमिति मत्वा इदानीं या परम्परा अनुवर्तते शङ्करभगवत्पादतः आरभ्य सुरेश्वराचार्याः सर्वज्ञात्म सरस्वती स्वामिपादाः इति ततः प्रभृति या परम्परा अस्माकं चन्द्रशेखरे सरस्वती स्वामिपादाः जयेन्द्र सरस्वती स्वामिपादाः इति या परम्परा अनुवर्तते तस्यां परम्परायाम् अद्य अस्माकं सौभाग्यवशेन तेषाम् अनुग्रहबलेन तेषामेव अनुग्रहबलेनैव एतत् कार्यं सुसम्पन्नमिति धिया नामरूपे व्याकरवाणी इति विद्यते तत्र एतेषां नामकरणम् इति धिया सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती कलवाद्यं सत्य चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती इति नाम्ना एतान् सर्वेपि भक्ताः स्तुवन्तः नमन्तः ध्यायन् स्तुवन् नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं ब्रह्मस्वरूपाः इति कृत्वा तद्विषये एतादृशनाम्ना सहित गुरुपरम्परां सर्वेपि भक्ताः ध्यात्वा गुरु अनुग्रहेण गुरोरनुग्रहादेव पुमान् पूर्णः प्रजायते प्रशान्तये जय शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर
स्वबिम्बायै श्रीचक्रबिलान्तस्तेजसे ललितायै द्विभुजायै सिद्धश्रीकामाक्ष्यै देवतायै नमः हृदये लम्बमाने करकरललिता स्वर्णविग्रहा अम्बुजाब्जं प्रतिदक्षहस्ते नास्ते बिलाद्बहिः कामाक्षीति द्विरुक्तैः शब्दैः ध्यात्वा कामाक्षी कामाक्षी जय जय शंकर हर हर शंकर